and more self-sustaining environment for generations to come. Now I call on the moderator of our English session, Mr. Rajdeep Sardesai, to come on stage for fireside chat with Mr. Pradeep Burman, Chairman, Mobius Foundation. Please welcome them with a round of applause. Thank you very much, ladies and gentlemen, and welcome to this very special show that we are having, where our focus is on the topics of the 21st century, really. Climate action, sustainability, and population dynamics. That's what we're going to focus on, and I'm delighted to be in the company of Mr. Pradeep Burman, the Chairman, Mobius Foundation, because the foundation is the one which has driven this entire project. And as I was telling Mr. Burman before we met here on stage, is that you are in tune with what the new age India really needs. We need less politics, and we need more focus on real issues of our times. So Mr. Burman, I wanted to understand from you your vision, why you chose these issues and why you believe that these issues are the relevant issues of our time. It's okay? It's working, sir. Yeah, the reason I chose these issues, there were about at least 17 issues from the sustainable development, like the SDGs are 17, so I'm just saying 17. But nobody talks about population, that's one reason. But the second reason is that I felt that population was the most important aspect of sustainability which nobody talks about. So this was a very important thing. The other objective of the Mobius Foundation, this is the focus area of Mobius Foundation, is education. Now these are both long-term issues which will help sustainability, because if you're looking about population stabilization, it's a minimum 60 years to 100 years before it stabilizes. And education, by the time the children get old, it's about 20 years, and then they take action. So these two both are slow moving. We do other things also. It's not that we don't do other things. But I'm obsessed with sustainability, because I think the planet is going bust. It's on the way of going bust. That's why. But you know, if I were to turn, like journalists generally tend to sort of be a little skeptical, only for the reason that there is a lot of talk now in this country on population. There is more and more conversation around climate action. But the reality at the end of the day is that there isn't enough action on the ground. You know, we are in Delhi, where we could talk about pollution, for example, and what it's doing to the lives of people. The fact at the end of the day is that we've just witnessed 3 cataclysmic flood-like events in Himachal Pradesh, not too far away from here. But again, there isn't enough of action on the ground from policymakers. Do you believe that these are all wake-up calls? All these events that are taking place are, in a sense, wake-up calls. That this is a country, unless the disaster hits you right in your face, you don't wake up to the reality despite all the conversations around it. That you're partly correct, but I wouldn't give it all the way, because we've been talking about population stabilization from the time of 1947. Yes. At that time, Nehru was advised by J.R.D. Tata, who was a visionary, that look, you have to limit the population, otherwise we'll be like Malthus and you will overgrow everything, and that's what's happened. So now people are taking action because they feel, really because of climate change, they're taking action. There's all these things are due to climate change. They don't look at population. They don't look at population. But population has automatically been controlled
by education. It is already less than TFR, what you call the total fertility rate, is below 2.0 in all the countries except maybe Nigeria and all the Western countries that are developed. They are educated, and it is below 2.0. India has still got 100 districts, over 100 districts that are above 2.0. And we intend to go to 100 districts to provide contraception and to control the population. If I may ask you, therefore, as a foundation, have you found, therefore, a greater receptiveness to the ideas that you started off with? And are you therefore happy with the progress that's been made over the years? I will say that people are very, very receptive of the idea of contraception and small families. It has filtered all the way down to the families. The only reason that they are not able to control the families, as far as we found in the districts that we've been, is they don't have the means of contraception. That means that the contraceptives that are there are not able to be reached to the people who need them. Even among what people say, Muslim people are having more children, but Muslim ladies are very receptive to having a small family. They don't want the husbands to know, but they would like to have contraception. In fact, the last NFHS survey actually shows decline in growth rates among Muslim families to be even sharper than other communities, obviously starting from a higher level, but that shows that's just one of the stereotypes that sadly is stuck in people's minds. People are changing across communities. A final message to a younger audience out there who perhaps is going to sort of look at these issues in the 21st century, confronting them? I think the main issue to be looked at is that the planet is being poisoned, the climate is being destroyed, and it is your future that you have to save. So save nature and do something about it. Join some group or the other. I wouldn't say anything about population, because anybody that's educated is not going to have more than one child because they can't get into school. Major problem today among youngsters is that they cannot get their children into the school that they want. This is the major problem. So they will automatically have less children, that is no problem. But loving nature, saying that nature is what I live on and therefore I need to protect it, otherwise I will die. That is my message to them. समझो इशारे धरती पुकारे थम 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 यहाँ बढ़ती आबादी जैसे है प्यारे बम 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 धरती माँ को दो आराम आबादी पर लगाओ विराम आंतरिक कृपया ध्यान दें, आबादी संख्या 140 करोड़ जम्मू कश्मीर के रास्ते कन्याकुमारी पश्चिम से होकर पूर्व को जाने वाली अपने निर्धारित समय से आगे चलते हुए भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। सर मेरे साथ इंसाफ कर दो, हेलमेट नहीं पहना है, गलती माफ कर दो। भाई मेरे बढ़ती आबादी को कह दो नो, हेलमेट नहीं पहना पर कंडोम तो पहनो। बाबू समझो इशारे धरती पुकारे थम 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 यहाँ बढ़ती आबादी जैसे है प्यारे बम 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 धरती माँ को दो आराम आबादी पर लगाओ विराम। May I just for a moment invite the panelists on the stage.
Poonam Muthreja is Executive Director at Population Foundation of India. David Richardson is CEO, Population Crisis, United Kingdom. Alistair Curry, Head of Campaigns and Communication, Population Matters in the United Kingdom. And Nandita Bajaj, Population Balance in the United States. Just, if I may invite all of you to come on stage, please. Thank you very much. Nandita here? Is Bajaj here? Oh, she'll join us virtually. Wow. Okay. So do we know that she's joining us, or do we have a connect to her? Okay. I'm fine, sir. Please go ahead. Actually, I won't mind, sir. Just pour it. Thank you, sir. Okay, we're just waiting for to see if we can connect with Ms. Bajaj. Okay. There she is. Hi, ma'am. Can you hear us? I can hear you very well. Thank you. Okay. If we'll just try to get your volume up slightly. That'll be great. We'll check if your volume is perfect. Can you just say something, ma'am? Yes, can you hear me okay? I'm Perfect. very happy to Perfect. be here. Wonderful. Wonderful. So we are ready to start. Thank you so much. I'll ask everyone in the audience to kindly settle down. Hello and welcome, ladies and gentlemen, to this India Today special at the International Conference on Sustainability Education, being brought together in partnership with Mobius Foundation, that is driving these issues of climate change, of sustainability and population dynamics, the issues really of a 21st century universe. In this special that we have, we're going to place women in focus in relation to these issues of our time. Because remember, in the face of the global climate crisis that the world faces, we are presented with an undeniable truth: the need to address the interconnected challenges in a way of climate action, of sustainability and population dynamics. Our discussions today will emphasize the pivotal role that women and children in particular will play in driving change, because it is only by empowering at least 50% of the population that you can pave the way for a sustainable and just future for all. We're joined on this special by a very distinguished panel. Please welcome David Richardson is CEO Population Crisis in the United Kingdom. Poonam Muthreja is Executive Director, Population Foundation of India. Alistair Curry is Head of Campaigns and Communications, Population Matters, United Kingdom. Nandita Bajaj is from the Population Balance in the United States. Give them a very big hand, ladies and gentlemen. I'm going to start with you, Poonam Muthreja, because we are discussing this at a time when India's Parliament has finally passed, or is set to pass, the contentious Women's Reservation Bill that will provide 33%
political representation to women in parliament. And yet the truth of the matter is, in India in particular, women still, particularly in rural India, face marginalization and often disempowerment. And therefore, you could argue, have limited agency when it comes to family planning in particular. How do you then empower women so that women become really the driving force in ensuring population stabilization? I'm very glad that J.R.D. Tata was mentioned in your earlier session. And when J.R.D. Tata started Population Foundation of India, founded it, the whole focus was not population control ever. It was, which is 52 years ago, it was development. And as you know, Mrs. Gandhi did say in the UN in 1972, development is the best pill for population stabilization and for empowering women. And I work on family planning, reproductive rights, reproductive choice, because I do believe that the most concrete way to empower a woman is for her to have a right on her body, her life, her freedom to make decisions. And the first begins with her education. If we invest in women's education, it's not just family planning. It is about giving a woman opportunities, at least opening opportunities. And education, again, has been known to be the best contraceptive pill. Second, when a girl gets married, and if she gets married, and if she does get married when she has a child, and if she chooses to have a child. So what has happened is that there's been a rural-urban north-south divide, where in the south, southern part of India, where we invested in good governance, health, better governance of health, education, and therefore people had better opportunities. We did better on not just fertility, but we did better on many other ways. And empowering women in a society, especially in rural areas, where the social norms dictate, and the very regressive patriarchal social norms dictate the life of a woman, it is very important that we first question those social norms: early marriage, sex selection, anti-female bias, investing more in sons, wanting to have more sons, and therefore you have endless number of children, which you don't wish to have. If women had opportunities to decide, they would be deciding very, very differently. And it's time we accepted that women and girls, even in the rural areas, Rajdeep, have different aspirations. It's thanks to the media, internet, and so on. So we have to accept that if we don't work on changing social norms and empowering women, they will do it themselves and force us to. And what you're saying is education is the key. I mean, absolutely. And that reflects, as you said, in the divide between southern India, the southern states, and many of the states of northern India, although the gap is slowly but surely reducing there. David, you've been at the forefront of addressing notions of population dynamics and sustainability. How do you see the intersection between climate action and gender equality? It's one thing, as we are talking, we need to empower our women. What will that do to the larger fight for ensuring climate action? Thank you. I had to think about this question very, very carefully and very long, and I'll put them in order of priority. I think the impact of climate change on gender inequality, or equality, you want to say, is firstly vulnerability and impact. I was looking at a film the other day on water in the it was called the water crisis
in the Rajasthan region. And the women there sometimes make 4 journeys a day to the well with 20-litre pots, anybody from 5 years old up to 90-year-olds. Obviously, in rural India, in these parts, climate change will have a tremendous effect on them. Therefore, women are particularly vulnerable in India and in developing countries. The second thing, obviously, I'm going to put in and reassess again, education. Empowering women is terribly important. They need education because that delays marriage, that will give them opportunities of learning, that will give them opportunities of getting better jobs and participating more. And this gets me on to the next answer, which I would say participation and leadership. You only have to look at Greta Thunberg, the Swedish activist, to know that women are incredibly better communicators than me, sitting here, and would get her point across in no time at all. I think women have been kept out of technical innovation, therefore they will play a major part if they can be educated in what they call the STEM technologies, science, technology, engineering, and mathematics. They've got very creative minds. Obviously, another thing that's terribly important, climate change, intersection in climate change and gender inequality is the right to health care and reproductive rights. You definitely need access to family planning everywhere in India, and I believe this is not happening yet. And I will add to that one thing that's not in many people's mind. You don't have access to internet in all the villages, which seems quite extraordinary in this day and age, where you've landed people on the moon, you're going to land people on the moon, and got a spatial, and you haven't had internet in it. And this has got to happen if you're going to have a breakthrough in gender inequality and having people, women, participating in the society. And then finally, policy and advocacy. Women are much better at dealing with in leadership and community development and getting the feeling of climate change across. After all, you educate a woman, you educate the whole family. While we focus on women, Alistair, you've been advocating for a sustainable global population. How do you persuade people, and I refer here to men and women now, on climate change and sustainability? Probably even more difficult at times in societies like ours where there are still sharp gender inequalities. But how would you go about do that? Where do you start? It is a very challenging issue. When I first took this job 6 years ago, I saw the job advertised and I thought, well, that's a no-brainer. Of course, if you have more people, that's going to have an impact on sustainability, on poverty, on all sorts of areas. And I was very surprised when I actually took on the job to find that people were resistant to that message. And I think it falls into a number of areas. The first is just understanding. Intuitively, people do understand that. But actually, if you move just even a little bit higher up into often the environmental movement, into policymakers, there isn't as much understanding as you might expect. One example which I constantly give is that the IPCC, in its last report on mitigation of climate change, said that the 2 strongest drivers of climate change, of emissions through fossil fuel use, are GDP per capita and population growth. I go and visit and talk to people who are very highly informed on climate issues on a regular basis. Almost none of them know that the IPCC said that. And one reason for that is it didn't make it into the summary for policymakers, which someone was talking about earlier on. You have to read 1,000 pages in order to find that piece of information. So at that policy level, there is a lack of understanding, not across the board. I think if you look at, for instance, UNEP or some other UN agencies, they're clearly make the association, but it often isn't recognized at policy level. And then another, I think, very important thing at a personal level and at a policy level is discomfort with this subject. And in many ways, it's justified discomfort. There is I'm particularly conscious, speaking in India, that there is a very dark history of population control, and that people should be suspicious of it. They should be conscious of all the risks that
go along with it. But I think we should also recognize that everything we've been talking about here, about education, about female empowerment, about addressing, tackling poverty, we know that gender inequality is the strongest driver, strongest correlate with unwanted pregnancies, for instance. So the recipe for addressing population is a positive recipe that we should feel proud to advocate for, but the word population often suggests something which is more contentious. But the reality is that if we're not talking honestly about the challenges, we're not going to solve our problems honestly. Nandita Bajaj joins me from the United States. She works with population balance. Nandita, you've written many articles on how population denialism, this is a term you've used, is harming the most marginalized communities and accelerating our ecological and social crises. Can you briefly explain what you mean by population denialism and how we can address that specific issue? Absolutely. Thank you for having me, and thanks for that question. So population denialism, it's an ideology, partly Alistair referred to it a bit, that says that population growth does not have any or much impact on the environment or on the people, and that therefore there's no need to talk about it, there's no need to address it. And there are a couple of reasons why population denialism exists. And one of it is actually what Mr. Berman started out with, your conversation, is a lack of ecological education, such that people do not understand that our planet is finite and that we are in a state of extreme ecological overshoot. We're consuming 75% more than the Earth can provide sustainably, which means we're actually stealing from the future. We're stealing from our children and from our grandchildren and taking away an opportunity for them to have a good life. We have seen in recent news that 6 out of the 9 planetary boundaries have been crossed. Of course, climate crisis is one of them. The biodiversity loss and the extinction crisis, where we are losing species at 100 to 1,000 times faster than pre-human times. We're seeing resource scarcity, especially dwindling freshwater supplies, where over a couple of billion people are living in water-stressed countries today, and nearly 5 billion people will be living in water-stressed countries by 2050. So, we're seeing crises like the refugee crisis. So over 1 billion people are going to be displaced from their homes, from their countries because of the climate crisis. And as my panelists have mentioned, it's the most marginalized communities that are impacted the most, people who have had the least to do, for example, with the crisis. Alistair mentioned the dark history of population control. That has also made people suspicious about talking about population, like China's one-child policy, like the sterilization campaign in India. But a lot of people don't know the dozens of amazing, incredible policies that have actually lifted people out of poverty, increased gender equality, and enabled people, women and men alike, to make better choices for themselves. So, those are, I'd say, 2 of the most contentious issues around why population denialism exists. And I can speak to some others as we go on in our conversation. Interesting term, population denialism. Poonam Muthreja, you worked extensively in this field for several decades, and Nandita just mentioned some of the darker moments. China's one-child family norm, India's forcible sterilization. There have been those from time to time in this country who've advocated legislation. Bring in legislation on population control, either by incentivizing people or disincentivizing people, that if you have more than 2 children, you won't get a government job.
will that really give women the strength you believe? Is legislation the way forward, or is it, as you kept saying, education, education, education? So I have no evidence from the world, Rajdeep, not just in India, that coercive population policies or programs or coercion of any kind, including incentives and disincentives, work. The Cairo Conference on Population and Development in 1994, 189 countries signed the Cairo draft plan of action, where they said we will not follow incentives and disincentives. And the two countries that did follow incentives, disincentives, and some form of coercion in the past are India and China, the two most populous countries in the world. What does that say about them? Second, the amount of energy we spend on diverting the debates on coercion. Even in India, we spend less time providing not just education, but family planning, health, and other services that empower women, including female workforce participation. We've spent too much, our politicians have spent too much time on debating and discussing and thinking only of a two-child norm and so on. And the two-child norm also in India that we talk about, we have in mind a particular population, and which is again totally wrong. As you earlier said, the Muslim population has declined the fastest. Second, I want to say that incentives, I want to give a good example. India has a meager budget of 1.4% health, and within that it has a meager budget of 4% on family planning. It's gone to 6% now. 6% of the family planning budget, we did a budget analysis, we spend on incentives for sterilization. 85% of this 0.4%. We spend 4% on temporary methods in a population which is growing because we have a population momentum, a large young population who doesn't need sterilization. And the other amazing thing, let me tell you how misguided our policies and programs have been, is that 77% of the women who experience sterilization have never experienced family planning before they went through sterilization. No temporary method. What were they doing? They were going for abortions. India has close to 16 million abortions according to government data in 2015. It's much more. People don't always acknowledge. So it doesn't make any sense from any point of view. And finally, individuals have to be seen as a resource and not to be controlled. Once they come, what do? We are not going to show them the sea. And I want to end by quoting the World Population UNFPA report. When the world reached 8 billion, they said 8 billion possibilities. Once people are born, you have to see them as a resource, invest in them, and stop spending time on getting diverted. And China finally had to do away with the one-child norm, then two-child, and now they have a three-child norm. And they have a disaster where they have an aging population, they have a declining working young population. They are not going to have people for the working, for the young working force population. And finally, look at the sex ratios in China. They are much worse than India, and that's what coercion does. Okay, so we're pretty clear. Coercion is not the way forward. I've got a very little time, but I want to get each of you to respond to a specific question. Alistair, to you, how do you see the balance between addressing overpopulation and respecting individuals' reproductive rights and choices? As Poonam has pointed out very clearly, coercion is not the answer. So what is the answer? And how do you address that balance between overpopulation but respect and individual rights? I want to have 3, 4 children. That's my right. I think it clearly is. And I think, if I may just
brandish this report, this, as we were talking earlier on, people think about China and India, but in fact this report that Population Matters produced is looking at those exemplary policies that have been adopted in other places, which Give me an example. So Thailand, for instance, Rwanda. I think very few people would think of Rwanda as a place which has got a very strong population policy in which they're very clear. They say this is not about controlling people, this is about empowering people. This is the approach that Rwanda has taken. And it is following a very simple recipe. If you empower women, if you tackle poverty, if you give people access to contraception, which still at the moment there is an unmet need of 250 million women in the world who have an unmet need for contraception. If you give education, we know again that education is one of the key drivers that will bring down fertility rates naturally. Yes, I do believe it is also important to give people advice about what the implications of a large family are, or a larger family, and I think that particularly applies in high-income, high-impact countries such as the one I come from, where the environmental impact, the carbon footprint of a single individual will be multiple times that of someone in India or elsewhere. David, is the progress slower than what we might have anticipated a few years ago in solving the overpopulation issue, or is the glass increasingly half full? Is the world increasingly recognizing the need to control population? I'm sure people are recognizing we've got to control population, but humans by nature are very stubborn. We have a very deep-seated belief in our own reproductive behavior. I come from a five-child family. I don't, but if I did, I want to have 5 children. That's often the case that happens, reproduction. Therefore, changing habits is very, very difficult. Another thing is, I've asked many people about their country. Do you think it's over? It's always India, or it's always somewhere else, always China. It's never the UK. Of course, we're among those population countries in the world. Absolutely ridiculous. But the answer is, there are lots of green fields around. The fact is, they don't accept it. And I think the fundamental reason was, and why I hosted the first World Optimum Population Congress back in 1993, was because scientists hadn't developed a sufficient, robust model of population. What was a sustainable population? And Paul Oatley came up with a figure of about 2 or 3 billion for the Earth. Right. And that's actually a reasonable level. Now we're 8 billion. And the Earth has been changing climate since then, since 1960s, and we know it. So population, the anthropogenic effect is here. So it's very slow. One reason we haven't developed it, now there is now a model we can use. Mattis Wackenagel and William Johnson of the Ecological Footprint, you've all heard of now, have developed this model. And governments could use that to define not only their own sustainability, but criticize their own size of population. We should do this everywhere. And it's not being done, it's done by very few small countries, but not the larger countries. Do you want to explain that model very quickly? Oh, yes. Well, it's basically ins and outs. Well, it's very difficult to do with our diagram, but basically, it's called biocapacity and footprint. You've all heard of the footprint, what you consume. They've got to equal. Basically, scientists have managed to evaluate all our ins, or what we basically consume every day, in every country, since 1962, and they've shown that we now consume more than the Earth can produce by about 1.73. In other words, it would take 1.73 Earths to produce 1 year's worth of ecological footprint, if that clearly puts it. And I think this is a very major breakthrough, because we now have a way of evaluating, everybody can evaluate if they're over-consuming or not. And as it happens, 90% of the Earth is. And we're going to increasingly consume as we need an increasingly more consumable society. So, yes, I expect there to be speed up, the decrease in population as people become aware. And it's education, internet, communication. That's what will do it. A final word then, Nandita. As you've written extensively on these issues, what would be a final message that you would have that you see as a solution? If I were to ask you if there was a magic bullet out there, where would you start? So since we are speaking about population and the word control has come up a few times, I'd like to start by saying
that the key to population stabilization and reduction is to remove control, patriarchal control that is currently preventing girls and women from making authentic and liberated reproductive choices for themselves, whether that includes, like Poonam said earlier, not having any children or having smaller families, because we know that the number of children that women and couples end up having, it matches the norm within that society. So if a country, the norm is 7 children, then you ask a woman how many children she wants, she will say 7 because she wants to belong in the community. And when she says she desires fewer children or no children, there are punishments in place, such as divorce or domestic violence or social isolation. So I would say the first thing we need to do is remove population denialism, but then also countries like the US, which is the richest country in the world, needs to triple its family planning support from the current 600 million to 1.7 billion in order to meet the unmet need that women have in countries around the world. 250 million women currently cannot access family planning and reproductive health care. And so that would be the first thing, an immediate thing. A rich country that spends $700 billion on its military budget to just give 1.7 billion to empowering women around the world to be able to make authentic and liberated choices. I think that last data point that you just gave summarizes the state of the world. If we are going to spend that much on defense and that little on family planning, it tells a lot about the world in which we live in and the long road that we still have, in a way, to put these issues of gender, climate action and sustainability on the policy makers' top of the mind. I appreciate all my guests joining me. Thank you very much. We don't have time for audience questions today, but we'll have, I'm sure, many more such discussions through the course of the conference. Thank you very much, David, Poonam, Alistair, and Nandita there in the UK. Thank you. Thank you very much. I would like to call upon Dr. Ram Boj to present the mementos to our distinguished panelists. You didn't want audience questions? Unless you want to. Thank you very much. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Rajdeep Sardesai.
Thank you very much, Dr. Ram, and thank you very much, our distinguished panelists. Now I would like to call on the moderator of our Hindi session, Mr. Saeed Ansari, to come on stage to begin the session on the topic of Jansankhya, Jalvayu or Jeevan. यांत्रिकगण कृपया ध्यान दें, आबादी संख्या 140 करोड़ जम्मू कश्मीर के रास्ते कन्याकुमारी पश्चिम से होकर पूर्व को जाने वाली अपने निर्धारित समय से आगे चलते हुए भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। सर मेरे साथ हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बहुत धन्यवाद आप सभी का ICSE के तहत हमारे इस पैनल डिस्कशन में शामिल होने के लिए। जलवायु, जनसंख्या और जीवन आज हमारा विषय यही है और इसके विभिन्न आयामों, विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। इंडिया टुडे ग्रुप पिछले 1 वर्ष से मोबियस फाउंडेशन के साथ मिलकर बढ़ती जनसंख्या पर लगातार विचार विमर्श कर रहा है और विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी ये कार्यक्रम को चला रहा है। इसके तहत हम अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हमारी जनसंख्या और उसके होने वाले कुप्रभावों पर चर्चा करते हैं। कितना जागरूक हम लोगों को कर पाए हैं, मोबियस फाउंडेशन की इस पहल को हम कितना लोगों तक पहुंचा पाए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जनसंख्या का जलवायु पर क्या असर पड़ता है, जनसंख्या का हमारे संसाधनों के दोहन पर क्या असर पड़ता है, अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हुई जनसंख्या का आपके हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, ये बेहद बेहद गंभीर विषय है। आपका परिचय, हालांकि हमारे जो चारों मेहमान हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं और सब बड़े नामी गिरामी जाने माने लोग हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप कार्तिकेय साराभाई जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप पद्मश्री हैं, डायरेक्टर CE अहमदाबाद और ट्रस्टी भी हैं आप साबरमती आश्रम के। बड़े गर्व की और सम्मान की बात है कि आज आप हमारे इस मंच पर हैं सर, बहुत धन्यवाद। स्वागत कीजिए हुमा मसूद जी का, जो कि यूनेस्को की सीनियर जेंडर स्पेशलिस्ट हैं और महिलाओं के लिए
महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के साथ बच्चों का जुड़ाव एक बहुत ज़्यादा है। हुमा जी, बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। डॉक्टर रामबूज, CEO मोबियस फाउंडेशन, सर आपकी उपस्थिति इसलिए भी प्रार्थनीय है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही के प्रयासों से ये कार्यक्रम हो पा रहा है और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं इस अनियंत्रित ढंग से बढ़ती जनसंख्या पर लोगों को जागरूक करने के लिए, वो डॉक्टर बूच आपका जो प्रयास है वो बेहद सराहनीय है। आप डॉक्टर बूच के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर गोविंद सिंह, डीन एकेडमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा और सबसे नामी गिरामी संस्थान है। आप मेरे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने विभिन्न समाचार पत्रों में संपादक की भूमिका निभाई है और अब बच्चों को पत्रकारिता जगत में किस तरह से देश की समस्याओं पर प्रशासन से प्रश्न पूछने हैं और शोषितों, वंचितों की आवाज़ बनना है, उसके लिए सराहनीय आप कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह आपका। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही डॉक्टर सिंह करना चाहते हैं और वो इसलिए क्योंकि एक रिसर्च का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी समस्या को सामने लाने के लिए और उस समस्या के निवारण या निदान के लिए। ये जो अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हुई जनसंख्या है डॉक्टर गोविंद सिंह, ये हम पर कितना बुरा प्रभाव डाल रही है और इसका जो प्रभाव है वो कैसे हमारे पूरे जीवन पर, हमारी जलवायु पर पड़ रहा है, हमारे जंगल पर, जल पर, जीवन पर, हमारे दैनिक कार्यों पर पड़ रहा है, हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। धन्यवाद सईद भाई। मैं आप सबसे पहले मोबियस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे मौका दिया। जो आबादी है वो वाकई बहुत ही एक भयानक विस्फोट की तरह से हमारे ऊपर पड़ी है। 1947 में 30-32 करोड़ की आबादी वाला देश आज 1 अरब 42-43 करोड़ पर पहुंच चुका है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। हम दुनिया के नंबर 1 देश बन चुके हैं इस मामले में। तो ऐसे में समस्याएं जो है वो विकराल से विकरालतर होती जा रही हैं क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो उतने ही हाथों को रोज़गार चाहिए, उतने खाना चाहिए, उतना पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए और सड़क पर चलने के लिए सड़कें चाहिए, ज़मीन चाहिए, कारें चाहिए, यहाँ तक कि पर्यटन के लिए पहाड़ चाहिए, नदियाँ चाहिए, समुद्र चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए उसको और ये आएंगी कहाँ से? जब सीमित संख्या में चीज़ें हैं, सीमित मात्रा में हैं तो आएंगी कहाँ से? तो बहुत घनघोर समस्या एक तरह से है और वो भी आबादी को घटाने के लिए, आबादी को नियंत्रण करने के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं हमारे देश में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन मिसाल के लिए और देशों ने जिस तरह के प्रयास किए, चीन का उदाहरण हम ले सकते हैं, जापान का ले सकते हैं, तो वहाँ समस्या और ज़्यादा विकराल हो गई। हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ा बहुत पहले 2 या 3 बच्चे बस कहते थे, फिर उसके बाद 2 बच्चों तक सीमित रहा, फिर 1 बच्चे पर आ गए लोग। तो इस तरह से हमारे यहाँ धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बूढ़े लोगों की भी आबादी है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा, हम दुनिया में सबसे ज़्यादा कहते हैं, बच्चों की आबादी भी है। तो इसमें जो है हम फिर भी थोड़ा बहुत संतुलित हैं, लेकिन चीन की हालत जो है, जैसे वहाँ बुढ़ापे की समस्या बहुत भयानक होती जा रही है, जापान में बुढ़ापे की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में जो है सारी दुनिया के सामने एक भयानक सवाल है कि कैसे योजनाएं बनाई जाएं और एक संतुलित किस्म का विकास हो। विकास के लिए जो संसाधनों के लिए जो लोग हैं वो एक तरह से उनका जो बंटवारा है वो सही तरीके से हो। इसलिए जो है मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल एक परिस्थिति है और इस परिस्थिति से सही योजनाओं के जरिए ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आपने विभिन्न आयामों पर जिस तरह से प्रकाश डाला है वो गंभीर है। सारा भाई जी, सर कई बार ये कहा जाता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी युवा शक्ति बढ़ रही है और वो जो युवा शक्ति है
वो हमारे देश के विकास में योगदान करेगी। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ समस्या पर बात करें तो आज हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए। हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है। आपकी दृष्टि में सर इसका कारण क्या है? क्यों हमारे देश में ही आखिर जनसंख्या इतनी बढ़ रही है? जो पृथ्वी की आबादी थी जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, तब शायद 2 या 2.5 बिलियन की आबादी सारी पृथ्वी की थी, और उसमें वो 1 से 2 आने में शायद 130 ईयर्स 130 साल हुए। अभी जो बढ़ रही है हर 13 साल में 1 बिलियन बढ़ रही है, हम 8 बिलियन तक तो पहुंच गए। तो ये जो गति है बढ़ने की, वो अपना देश की बात नहीं है, सारा पृथ्वी की बात है कि ये तो हम सस्टेन कर सकते ही नहीं है। ये सस्टेनेबिलिटी, जलवायु और ये साथ में मोबियस ने जो रखा है, इसलिए रखा है कि दोनों में एक दूसरे के ऊपर इसका असर है कि भाई एक सस्टेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो इसमें कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन एक मुझे बात करनी है कि यहाँ एक मान्यता है कि हमको एक लड़का तो चाहिए। अगर लड़का नहीं है तो बुढ़ापे में कोई संभालेगा नहीं, कोई संभालेगा कौन, और अपनी अंतिम अग्नि संस्कार भी जो करने हैं तो वो लड़का ही होना चाहिए। मेरे पिता विक्रम साराभाई, जब वो उनका देहांत हुआ, मैं अब्रॉड था, वो प्लेन रोम से आगे नहीं आ सका वो दिन, तो मल्लिका जी ने किया था, मेरी बहन है। तो उस दफ़े लोग बोलते थे कि भाई लड़की कैसे कर सकती है, पर वो एक बिल्कुल गलत बात है। और ये जो लड़की और लड़के की जो समझ है, वो सबसे पहले तो सोच बदलनी चाहिए। कितने लोग हैं, वो लोगों को 2 ही चाहिए, लेकिन 2 लड़की आ गई तो बोलेंगे अच्छा अभी तीसरा क्यों नहीं है, चौथा क्यों नहीं। तो ये एक तो अपने देश की एक बहुत गलत फहमी है जो चेंज करनी की। सर आपने बहुत ईमानदारी के साथ, हालांकि हम इस बात को स्वीकार करने में हिचकते हैं, झूठ बोलते हैं खुद से, अपने आप से, लेकिन ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और हम सभी को कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम पब्लिकली तो बात करते हैं कि नहीं लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में वो बेटे वाली, और आपने एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया संस्कार वाला कि भाई ठीक है जीते जी तो कौन संभालेगा, जी लेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद तो बेटा ही अग्नि देगा या बेटा ही दफन करेगा। ये हुमा जी बहुत अजीब सी बात है जिसे बदलना होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने ईमानदारी से, साफगोई से इस बात को सर यहाँ पे उठाया है। हुमा जी आप महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में दुनिया भर की महिलाओं के लिए आपका जो कार्य है, आपका जो योगदान है, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं, उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन महिलाओं का अनियंत्रित ढंग से बढ़ती हुई जनसंख्या पर अगर सबसे अधिक असर होता है, प्रभाव होता है, तो शायद गलत नहीं होगा। और महिलाओं के साथ साथ उनकी हेल्थ, और उनकी हेल्थ के साथ साथ उनके बच्चे, ये डायरेक्टली सीधे उससे प्रभावित होते हैं। कैसे देखती हैं आप बढ़ती जनसंख्या को महिलाओं के लिए एक अभिशाप के तौर पर? मैम धन्यवाद। ये सवाल बहुत ही उचित है और मैं जो हमारे कलीग ने अभी बोला उससे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। और अगर हम सिर्फ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2000 में अभी फॉर्म हुई और वहाँ से अगर हम इस कहानी को देखें, और हम बहुत पहले नहीं जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि सरकार जो है और many people have said that they are on the right track, सही कर रहे हैं कि हमें जनसंख्या को कम करना चाहिए। और हमने हर तरह की कोशिशें की हैं, जैसे कि हमने फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ करने के लिए कोशिश की, तो उसका हमें फ़ायदा होना चाहिए। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स और जैसे कि एक
कहलाता है इनका प्लान ऑफ एक प्लान ऑफ एक्शन और एक पॉलिसी और प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें 25 स्टेट्स जो हैं सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो इन्वॉल्व हैं, और ये पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स वहाँ तक पहुँचे इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट तक। और इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जैसे कि आप एडवोकेसी प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं, आशा वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, पर इसके साथ साथ हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या महिला का इसमें एग्रीमेंट है कि नहीं, क्या उस गृहिणी का एग्रीमेंट है कि नहीं, क्या उन लड़कियों को आपने इनफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहले से दी है कि नहीं। हम चाहते हैं कि अर्ली मैरिजेस ना हों, हम रिड्यूस करना चाहते हैं मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर हम फिर सेक्स सिलेक्शन भी करते हैं, हम कोर्सिव मेजर्स भी करते हैं। मैम आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बहुत इम्पोर्टेंट आपने यहाँ बात कही जी, अर्ली मैरिज, अर्ली एज मैरिजेस। ये कोई ऐसा डेटा आपके पास है या ऐसा आप अपनी रिसर्च में, अपनी एडवोकेसी में आपको क्या पता चला है कि ये सिर्फ गांव देहात वाले लोग नहीं, हम लोग जो यहाँ हमारे साथी लोग बैठे हैं वहाँ भी होता है, बच्ची बड़ी हो गई, ग्रेजुएट हो गई, बस काफ़ी है, मतलब मैक्सिमम हमें लगता है कि क्या हमारे देश में ये मानसिकता है मैम? अभी भी बहुत सारे प्रदेशों में कर दो अभी भी बहुत सारे प्रदेशों में हमारे स्टेट्स में अर्ली मैरिजेस हैं, इसकी प्रथा अभी भी चल रही है। हमारे वहाँ अभी भी सेक्स सिलेक्शन चल रहा है, जैसे सर ने कहा कि अगर 2 लड़कियाँ हो गई तो फिर बेटे की ज़रूरत है, बेटा चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कि रूरल और अर्बन में, क्योंकि हम मोर्टेलिटी रेट को कंसिडर करते हैं, तो हम ये सोचते हैं, अर्बन थिंकिंग जो है वो ये है कि अगर 4 बच्चे हैं तो 2 तो सर्वाइव कर जाएंगे हमारे बुढ़ापे के लिए, पर अगर हम रूरल परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वहाँ उनका थिंकिंग इज़ कि 4 सर्वाइव करें या 2 लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए वो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मतलब परिवार में बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़ जो हम नज़रअंदाज करते हैं हमारी अप्रोचेस और पॉलिसी में, वो ये है कि हम पॉवर्टी को नहीं देखते हैं। पॉवर्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें कि जो फैमिलीज़ हैं वो अपने परिवार को बढ़ाते हैं। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है जिसकी वजह से नॉलेज और इसकी जो वैल्यू है स्मॉल फैमिली की वो नहीं आ पा रही है। हमारे जो एडवोकेसी है उसमें हमने सही प्रोग्राम्स और इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है उसका अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हम चाइना से ऊपर आ गए, पर उसको हमें एक नेगेटिव वे में देखना जो है, जो मैं बहुत सुन रही हूँ, मैं उस नज़र से नहीं देखती हूँ। वन, आई बिलीव इन विमेंस पावर एंड गर्ल्स पावर। आप देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट की टीम्स बन रही हैं, फुटबॉल की टीम्स बन रही हैं, हाउस फुल जाता है अब जब लड़कियां खेलती हैं। तो हम एक तरीके से लड़कियों को अगर एक्सपोजर दें और उनको इक्वल पार्टनर्स बनाएं, इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड मेन, क्योंकि हम जब क्या नाम है ये जो कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम इसको रोकने के लिए जो एक ऑपरेशंस कराए जाते हैं, तो नसबंदी जिसको कहा जाता है, तो उसमें सिर्फ महिलाओं ही के पास जाया जाता है, मेल्स और मेन नाइदर उनको इन्फॉर्म किया जाता है ना उनको इंगेज किया जाता है। तो ये भी जो डिफरेंस है ऑफ नो कॉन्वर्सेशन विद मेन एंड बॉयज इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर अ पॉपुलेशन। येट आई बिलीव दैट women are going to be I mean because there's a demographic dividend है, अगर हमारी population high है तो उसको हम एक anxiety से और एक negativity से ही क्यों देख रहे हैं। हम positive approach से देखें कि वो एक फ़ायदे का भी तो मूल्य है और उनका भी तो कुछ मूल्य है जो लोग हैं हमारे
बिल्कुल मैम, देश में। बिल्कुल मैम, तो ये उनको हमें उस लेंस जी, से देखना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं देख रहे हैं हमें देखना चाहिए। थैंक यू मैम। आगे और आपसे बात करते हैं डॉक्टर बूच। सर 1 वर्ष से अधिक हो गया है और विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी इस प्रोग्राम के तहत आप एडवोकेसी जागरूकता फैलाने वाले बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो लगातार कर रहे हैं और ये एक बड़ा लंबा समय होता है। आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में सफल हो पाए हैं? कुछ लोगों को जागरूक करने में आपको सफलता मिल पाई है सर? विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी मुहिम है जिसको मोबियस फाउंडेशन ने शुरू किया इस उद्देश्य से जो समस्याएं श्री कार्तिकेय साराभाई और हुमा जी या गोविंद सिंह ने जो यहाँ बताई, उन सारी समस्याओं को कैसे जो है हम जनमानस तक, एक तो वहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं, ख़ास तौर से महिलाओं तक कैसे हम उनको सशक्त बना सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से। और दूसरा जो है जो पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि हमारे जितने एपिसोड्स हुए हैं इसमें कम से कम एक कोई पॉलिसी का बंदा जो है ज़रूर होता है, तो उनको भी हम कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं। एक तरफ तो एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि ये पूरा जो प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी का है और ये अभी तो ये इंडिया टुडे आज तक ग्रुप से लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, बट इसके पहले से हम लोग जैसे ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन ICSE है, ये 5वां संस्करण है और हम लगातार पिछले सत्र में हमारे चेयरमैन प्रदीप बर्मन जी ने बताया कि मोबियस फाउंडेशन का उद्देश्य एक तो शिक्षा है, वो भी सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा, और दूसरा जनसंख्या को स्थिर करना, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। इन दोनों को जोड़कर हम चाहते हैं जो समाज में चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, जैसे कार्तिकेय साराभाई ने बताया कि कैसे बालकों को एक तरह से प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो सारी भ्रांतियों को इस कार्यक्रम के माध्यम बड़े सटल तरीके से, आपने देखा एक कैप्सूल यहाँ चलाया गया था, सो सॉरी, उसने इस तरह से बड़े सटल तरीके से इस संदेश को पहुँचाया जाता है। लेकिन साथ साथ हम ग्राउंड में भी कर रहे हैं काम, जो हाई TFR वाले ज़िले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वहाँ हम लोग फील्ड में भी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में, और वहाँ जो कंट्रासेप्टिव्स हैं या जो हेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज है और शिक्षा है, ये सारी चीज़ें एक साथ एक तरह से एक मिला जुला प्रयास है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग लेवल्स पे, और बहुत सारे मल्टीमीडिया जो हमारी स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी इन संसाधनों का उपयोग करके हम चाहते हैं कि हम इस समस्या को एक तरह से समस्या न मानकर एक पॉजिटिव जो है वे में इसको टैकल कर सकें। सर ये नेक काम है और इसमें आप बहुत तन्मयता से जुटे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसका परिणाम आना चाहिए। समय लग जाता है कभी भी मैम अच्छे काम को करने और उसके परिणाम में सर वक्त लगता है। हम इस सत्र के अगले दौर में डॉक्टर सिंह आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि सरकारें कुछ भी करें, कितना भी काम करें, मोबियस फाउंडेशन, यूनेस्को जैसी संस्थाएं काफ़ी काम करें, क्या आपको डॉक्टर सिंह ये लगता है कि जब तक आपकी हमारी हम सब लोगों की भागीदारी नहीं होगी, समाज इसमें सम्मिलित नहीं होगा, तब तक इस तरह के प्रोग्राम्स सफल नहीं हो सकते? और आप कितनी भागीदारी देखते हैं सर, और ये कितना महत्वपूर्ण है? कोई बदलाव आप समाज में इस तरह के प्रोग्राम्स का देख पाए हैं? क्योंकि एक लंबा अनुभव आपका जर्नलिज्म का रहा है और आप इन तीनों जो विद्वान हमारे साथ बैठे हुए हैं
इनके ख़बरों को कवर करते रहे हैं, इनके इनिशिएटिव को आप दुनिया के सामने लाते रहे हैं अपने अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से। बहुत ही जेन्युइन सवाल आपने किया है। वास्तव में जो सुधार है वो तो केवल सरकार के भरोसे बैठने से नहीं होगा, हम सभी को लगना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ी भूमिका शिक्षा की है। मैडम ने भी कहा, अभी हुमा जी ने भी और सारा भाई जी ने भी कहा कि शिक्षा के बिना जो है वो सब कुछ अधूरा है। हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव दिखाई भी देता है। जैसे जो शिक्षित परिवार हैं, युवा हैं, दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं, तो वो अपनी फैमिली की प्लानिंग जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं। मतलब अनेक स्तरों पर हमने देखा है कि अब मध्यवर्गीय जो महानगरों में अपर मिडिल क्लास में भी 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, और लड़कियां होती हैं तो भी 2 बच्चों पर रोक लगा देते हैं लोग। कोई बात नहीं, अब वो जो एक टैबू था हमारे सामने कि लड़का होना ही होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे शिक्षा की वजह से कम हो रहा है। तो एक तो मुझे लगता है कि शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है, और यदि शिक्षा अच्छी शिक्षा समाज में फैले तो उसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी भूमिका मुझे लगता है वो मीडिया की है। हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि जिस तरह से होर्डिंग हैं या टेलीविज़न है या रेडियो है या अखबार हैं, उन्होंने इन समस्याओं को जिस तरह से लिया और उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका ज़बरदस्त असर पड़ता है। गांव में भी काफ़ी असर पड़ता है। हालांकि वहाँ जो एमटीपी की तरफ इशारा कर रही थी मैडम, एमटीपी का बहुत दुरुपयोग भी हुआ है, खास करके लड़कियों को, वुमेन गर्ल चाइल्ड को रोकने के लिए बहुत बुरे स्तर पर जो है काम हुआ है। लेकिन अब उस पर भी थोड़ा थोड़ा रोक लग रही है, और चारों तरफ जो है जो मीडिया की वजह से जो जागरूकता है वो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, और सब तरफ इसका असर पड़ रहा है। पर्यावरण का चिपको आंदोलन का ज़बरदस्त प्रचार हुआ, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उसका प्रचार काफ़ी किया। हालांकि आंदोलन तो महिलाओं ने किया था रैणी गांव की, तो उसका भी ज़बरदस्त पहाड़ों में भी काफ़ी असर पड़ा है। मैं चंपावत में गया, मायावती आश्रम है जो स्वामी विवेकानंद ने 1903 में बनाया था, तो उनके पास एक रजिस्टर है उनके पास जो 1903 से लेकर के अब तक का तापमान जो है वो रिकॉर्ड करता है। तो ये मालूम पड़ा कि 1950-60 के दशक में तापमान बढ़ने लगा था, लेकिन जब से वो पहाड़ियाँ फिर से हरी भरी हुई, मतलब जंगल कटने पर रोक लगी और एक तरह से पर्यावरण उस इलाके का सुधरा, तब से वो लगभग एक जैसा है। यानी मैं समझ लीजिए कि 2007 या 8 में गया वहाँ, और तब और 1901 का या 1903 का जो तापमान है वो बराबर था। तो ये उन्होंने ये बताया कि ये पहाड़ियाँ जो सामने की पहाड़ियाँ जो पहले नंगी हो गई थी, अब वो फिर से हरी भरी हो गई हैं, और इसका असर जो है यहाँ के तापमान पर पड़ा है। तो इसलिए जागरूकता मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, और मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी निभाता रहे, ये हम चाहते हैं, यही हमारी उम्मीद है। लेकिन ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। आप अंदाज़ा लगाइए कि 100 साल से भी ज़्यादा में अगर हम तापमान को मेंटेन कर पा रहे हैं वहीं पर, और ऐसे मौके पर, ऐसे अवसर पर जब जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है सर, और ज़बरदस्त दुनिया उससे परेशान है, तो सर ये बहुत बड़ी बात है। चिपको आंदोलन का आपने उल्लेख यहाँ पर कर दिया। कार्तिकेय साहब, छोटा सा प्रश्न, बात ही करते रहेंगे हम, कुछ समाधान भी दीजिए। कुछ है आपकी दृष्टि में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ आपके पास? एक तो ये बात करनी है कि जनसंख्या की जो बात है वो अलग सी बात नहीं है, वो विकास और शिक्षण, विकास और एजुकेशन दोनों के साथ जुड़ी हुई है। गोविंद जी ने जब बताया कि सबसे अच्छी प्रोग्राम तो ये होती है कि हर चाइल्ड इंडिया में वो शिक्षा उनको मिले, मिनिमम टीचिंग मिले, तो ये करने की ज़रूरत है, और विकास की ज़रूरत है। देखा है अपने देश में कि जो जनसंख्या जो बढ़ती गई है उसकी गति कम हो रही है, और जहाँ जो प्रांत में हिंदुस्तान में जो प्रांत में जो एजुकेशन लेवल हाई है, वहाँ यूरोपियन लेवल्स जैसे रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल भी आ गया है। तो ये समस्या सिर्फ पॉपुलेशन की बात करने से नहीं होती है,
ये इसमें शिक्षा के बारे में। दूसरी बात है कि शिक्षा कौन सी शिक्षा, क्या शिक्षा। तो एक मैंने पहले बताया कि ये जो ये जो इंसिस्टेंस है कि हमको एक लड़का चाहिए, हाँ, तो एक मैंने फिल्म की क्लिप ली थी, शबाना आज़मी की है। तो उसमें जो 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 वहाँ का आदमी है वो शबाना को धक्के मार के बाहर निकालता है कि भाई आप लड़की ला सकती है, हाँ, मुझे शायद दोबारा शादी करनी पड़ी। तो वो चुपके से बोलती है कि आपको ये नहीं मालूम है कि ये जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय द फादर एंड नॉट द मदर। अभी एक ही ये बात है, मैंने एनसीईआरटी को भी बताया था कि एक कंपलसरी क्वेश्चन 2 मार्क का हर पेपर में आप लगा दो, पहले से बोल दो कि ये आने वाला ही है। इतना ही कि ये जेंडर, जो आपके बच्चे का जेंडर है वो बाप से तय होता है कि माँ से तय होता है। ये एक ही क्वेश्चन मैंने बोला पहले से फोड़ दो क्वेश्चन, हाँ, सबको दे दो। गुड आइडिया सर, अच्छी बात, अच्छी बात। और ऐसे आप लोग भी सब सोचिएगा, कहिएगा लोगों से। एक भी ऐसा स्कूल में गया हुआ बालक नहीं होना चाहिए कि ये जिसे पता ना हो, पहले से बोल दो कि ये प्रश्न आने वाला ही है, हम फोड़ दो क्वेश्चन को, हाँ। तो ये हमने बताया। दूसरा है सेक्स एजुकेशन की जो जरूर है। तो ये भी जो गलत कितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स है वो है, तो ये भी एक एजुकेशन जरूर। इसलिए एजुकेशन अपने पास सबसे ज़्यादा टूल है। और विकास, अपना देश अभी आबादी तो सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन बड़े देशों में सबसे गतिवान जो जीडीपी भी बढ़ रही है अपने देश में है। तो ये पॉपुलेशन की भी पॉलिसी होगी है, ये पॉपुलेशन के लिए भी इसमें ही करेंगे। तो आपने पहले बताया था कि भाई अगर डिविडेंड है कि नहीं, डिविडेंड है, युवानों का डिविडेंड तो जरूर है, लेकिन ये डिविडेंड समझ के वो तो हो गया बात, तो अभी स्वीकारेंगे ये डिविडेंड है, लेकिन पॉपुलेशन कम करना है, स्टेबिलाइज करना है। और ये स्टेबिलिटी के लिए पॉपुलेशन की एजुकेशन तो करो, लेकिन साथ में विकास और बेसिक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, ये भी देनी चाहिए, देना जरूरी है। मैम हुमा जी, आपकी संस्था यूनेस्को, मोबियस फाउंडेशन और इस तरह की बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वर्षों से कर रही हैं, और एडवोकेसी, जागरूकता फैलाना, सब कुछ करते हुए आपको लगता है मैम कि काम जिस दिशा में होना चाहिए हो रहा है, उसका रिजल्ट मिल रहा है, या काम किए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है? आई एम सो सॉरी, कोई असर नहीं हो रहा है? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे 2030 में एक टारगेट है और सारी मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया है, साइन किया है, और उन टारगेट्स को फुलफ़िल करना है। तो हमारी जैसी संस्थाओं का काम है कि हम फैसिलिटेट करें, आइदर कोई नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज़ बना के, और एनहांस करना उन पॉलिसीज़ को जो सरकार की हैं। हम लोगों का काम होता है कि हम नॉलेज और रिसोर्सेज बनाएं और उनको शेयर करें, वो टूल्स बनाएं, जैसे कि यूएन जैसा है, और पॉपुलेशन कमीशन बनता है, इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कराए जाते हैं, जिसमें कि हम चाहते हैं कि देश जो है वो उन मुद्दों को डिस्कस करे, उन पे अटेंशन लाए। हम ट्रेनिंग टूल्स बनाते हैं, क्योंकि सर ने अभी मेंशन किया कि हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। रिसेंटली यूनेस्को ने इंडिया में स्पॉटलाइट रेड टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल्स ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन लॉन्च किया, और हमने ये देखा कि ये बेस्ड है ऑन अ सर्वे एंड गैप एनालिसिस रिपोर्ट जो हमारी पॉलिसीज़ का है, और हमने ये पाया कि सेक्स एजुकेशन या कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो है वो है हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में, पर टीचर्स नहीं उसको पढ़ाते हैं। उसके बारे में बॉयज़ अगर क्लासरूम में हैं, जो हमारे सर्वे ने बताया कि लड़कियां और लड़के साथ बैठ के उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। और सेक्स एजुकेशन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जिसके बारे में अगर आप डिस्कस करें तो उसका भी एक पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी एक एस्पेक्ट है।
पर इसको एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट माना जाता है, इसको जेंडर लेंस से नहीं देखा जाता है, क्योंकि और भी जेंडर्स हैं जो मेंस्ट्रुएट करते हैं पर हम उनके बारे में उनको कंसिडर नहीं करते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या जो परेशानियां आगे लड़कियों को इससे आती हैं, हिस्टेरेक्टमी कराया जाता है और जो डिसेबल्ड हैं उनके जो इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा यूनेस्को या यूएन एजेंसीज जैसे यूएनएफपीए है, जिसका कि एक ये मेन रोल है, पॉपुलेशन फंड है यूएन का, जो कि इस बारे में बात करता है, और हम डेटा को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, हम इनकरेज करते हैं कि देश उन डेटा को कलेक्ट करे और उसको शेयर करे। और इस डेटा ही के माध्यम से हमें पता चला है कि बहुत सारे देश जैसे पोलैंड है, रशिया है, बहुत सारे यूरोपियन देश जो हैं वो आज ज़ीरो पॉपुलेशन के उस पे आ रहे हैं, कगार पे हैं। तो कहीं जनसंख्या बढ़ रही है और कहीं कम हो रही है, और उन सब के इश्यूज़ हैं, मतलब चैलेंजेस हैं, जहाँ पे कि एजड पॉपुलेशन हो रही तो वो प्रॉब्लम हो रही। तो यूएन का या यूनेस्को का रोल है कि कंट्रीज़ को इनकरेज करें कि आप अपना बजट बढ़ाइए इस एरिया में, आप एजुकेशन को एक टूल बनाइए, पॉवर्टी इंडेक्स को इम्प्रूव करिए, वेजेस ठीक करिए। इसके जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के इश्यूज़ हैं कि जब घर में ये कहा जाता है कि लड़की जो है वो क्यों है और लड़का क्यों नहीं पैदा हो रहा है, या आपको अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं तो सिर्फ और महिला को करना है, अर्ली मैरिजेस जैसे हमने कहा, और चाइल्ड मैरिजेस की प्रथा अभी भी है हमारे बहुत सारी जगहों में। तो उन सब के बारे में आप कह लीजिए कि आईना दिखाने का काम जो है वो हमारा है, और हम इनकरेज करते हैं कि आईना नॉट इन अ नेगेटिव वे पर इन अ पॉजिटिव वे, कि कैसे हम इम्प्रूव कर पाएं इन ऑर्डर टू रीच दैट सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। मैम, वो आईना जब आप दिखाती हैं तो उसका असर भी होता है, अपनी सूरत चाहे वो उस पर कुछ दाग धब्बे हो नज़र आता है और हम उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन आपने हम दोस्तों इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, ये बता दें कि 2 सवाल हम आपसे हमारे विद्वान पैनलिस्ट के लिए आप पूछ सकते हैं, कोई भी। सर, एक प्रोग्राम ख़त्म करें, उसके बाद 2 हो गए यहाँ पर। तो आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया हमें दे दिया प्रोग्राम समाप्त करने का। डॉक्टर बोझ, राम बोझ सर, हम आपसे समझना चाहते हैं, हुमा जी ने कहा कि भाई बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ अब तो ख़त्म पॉपुलेशन, तो कुछ वर्षों में अगर ऐसा रहा तो डेफार तो स्थिर हो जाएगा सर। अब चाइना ने अपनी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है पॉपुलेशन, ऐसे में ये जो विराम एजेंडा सस्टेनेबिलिटी, यूनेस्को और दूसरे लोग हैं, आपका ये प्रासंगिक रह जाता है सर प्रोग्राम? ज़रूर जनसंख्या कई देशों में जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइज हो चुकी है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट TFR है वो 2 या उससे नीचे पहुंच गया है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। ये जिसको हम कहते हैं कि ये जो मोमेंटम है पॉपुलेशन का वो तो जारी रहे। भारत की भी पॉपुलेशन अभी जो है एक तरह से 2.1 के आसपास है, जो कि स्टेबल है। कुछ जगहों पे ज़्यादा है TFR रेट, कुछ जगहों पे कम है, लेकिन ओवरऑल स्टेबलाइज्ड है। लेकिन फिर भी हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.5 बिलियन पहुंच जाएगी 2030 तक और 1.6 तक 2050 तक। तो बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारे संसाधनों पर है। हमारी जो सस्टेनेबिलिटी एजेंडा है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें, इसको संतुलित रखें, ये तभी संभव है जब आबादी भी संतुलित हो और दबाव कम हो। इकोनॉमिस्ट का अलग, GDP या जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एक अलग एजेंडा है, लेकिन जो संतुलित या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पूरा कंसेप्ट है उसमें यही है कि जो ड्राइवर्स हैं इसको अनसस्टेनेबिलिटी की, जैसे जो जैव विविधता हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जो प्रकृति है, उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण हमारी बढ़ती जनसंख्या है, क्योंकि हम उनका दोहन कर रहे हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज में जो
जो फैक्टर्स हैं इसको बढ़ाने में, वो उसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी ज़रूरतें, क्योंकि जो कंजम्पशन है उसी हिसाब से प्रोडक्शन है, और ये प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ये जो दुष्चक्र है इनका, जो विशेष सर्किल है, वो जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बैलेंस जारी रखना है, और उसमें इस तरह के कार्यक्रमों जो शिक्षा, जागरूकता, एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें जो एक मिली जुली जो हमारा प्रयास है, एक कंपोजिट इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको मेरे समझ से एक तो शिक्षा, जागरूकता, पॉलिसी चेंज या इवन एम्पावरमेंट, ये प्रोसेस है, टाइम लगता है, ये तो ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाए, तो ये तो लंबे समय तक चलना है। और पर्यावरण की समस्याएं जो हैं, जो एक तरह से हम कहते हैं जैसे वर्ल्ड में क्लाइमेट इमरजेंसी है इस समय, तो ये सब के पीछे यही सब है, हमारे लोग हैं, हम ही हैं इसके कारण। तो हमें इस चीज़ को उस तरीके से देखकर और एक सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन के मद्देनज़र या उसके परिप्रेक्ष्य में कदम उठाने होंगे, और ऐसे कार्यक्रमों का जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी शुभकामना आपके साथ, तो हुमा जी जैसे लोगों के साथ हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना, आपने एक बहुत संसाधनों के दोहन की बात सर कही, और वो बढ़ती जनसंख्या का सबसे प्रमुख कारण है। और आज देखिए दुनिया के विकसित राष्ट्रों में आप देखिए कि कहीं अगर बाढ़ आ रही है तो पूरी तरह से शहरों को, कई शहरों को तहस नहस और बर्बाद कर रही है। गर्मी पड़ रही है तो ग्लेशियर्स बुरी तरह से पिघल रहे हैं। ठंड पड़ रही है तो अचानक से ज़्यादा, हमने अपने देश में ये एक्सपीरियंस किया पिछले कुछ दिनों में, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, और ये सारा का सारा क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। इस पर गंभीरता से सोचना होगा। दो लोगों ने प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त की है। मैम आपके पास आते हैं, यहाँ लेडीज़ फर्स्ट नहीं, सर ने पहले क्योंकि कहा था मुझसे। सर प्लीज़ माइक दीजिए सर को। आइए जल्दी से सर, बैठिए ना, बैठ कर आराम से पूछिए प्लीज। माइक दीजिए जल्दी। सर आप बैठ कर पूछ सकते हैं आराम से। नहीं, बैठ के मुझे देख नहीं पाएंगे। अच्छा प्लीज भाई मुझे माफ करना, मैंने हाथ पहले उठा दिया। जो डिस्कशन वी हैव, पहले तो मेरा सबको प्रणाम। मैं सर एक सेकंड, आपको एक बार कार्तिकेय साराभाई जी के लिए धन्यवाद। अरे यही प्रोग्राम है आपका। इसी हॉल में होना है। ठीक है सर दो सवाल, बस दो सवाल। हाँ ये बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए और उनका बहुत ही अच्छा हल दिया कार्तिकेय जी ने, सबने दिया, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। बस मेरा सवाल ये है, जो हम बच्चे पैदा कर रहे हैं उनका जीवन स्तर, उनकी शिक्षा, जहाँ जहाँ पर साधन है, शहरों में, छोटे टाउन्स में बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है। और हम देखते हैं बच्चियाँ जो हैं, बच्चों से अच्छा नंबर लेके पास हो रही हैं, आज से नहीं कई साल से। अब बात ये आती है कि ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं, क्या उन बच्चों को पूरा भोजन मिल रहा है, क्या जो माँ जो गर्भवती है उसे क्या पूरा खुराक मिल रही है, हम किस तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आप किसी हमारे सभी से कोई भी जवाब दे दे सर, या किसी से पूछना चाहते हैं? ये आपका स्टेटमेंट था, बहुत बहुत अच्छी बात है। मैम ये बिल्कुल सच है सर, आपने जो कहा सच्चाई है जी। Yeah, I would like to appreciate first of all the members of the panel, worthy discussion, very enrichful session. My question to you is, sir, I feel whatever discussion has happened, it has created a lot of impact on our community, on our society. Population has been like in the urban areas, in most of the area, we are able to see many changes have happened. People are aware. Nowadays, concept of nuclear family has come up. Now my question is, if we see around, most of the families are nuclear families, especially in urban areas and even urban areas also. Now, along with the advent of this nuclear family concept, because mother and father, both of them, they are working, now a lot of burning is happening in the family.
So burning is happening, children are not having time to spend with the parents, or parents are not having time to spend with the kids also. If we see our country, more than 2,500, earlier we were talking about sterilization, but fertility centers are coming up. Because out of stress, anxiety, depression, divorce cases, so how do we relate that with the sustainability? I mean, we are finding positive changes. What I'm trying to ask is, I hope my question is clear. Dr. Booch, sir? Yeah, it's a very relevant question in the context of sustainability. सर आपसे निवेदन है, मैं आपको भी रोकना चाह रहा था कि अगर आप हिंदी में प्रश्न पूछ लेती तो हमारे लिए आसानी हो जाती। मैं हिंदी में ही कोई बात नहीं, आप हिंदी में जवाब दे दीजिए। मैं हिंदी में, अब आप हमारे वहाँ तो नहीं दिख पाएंगी, सॉरी। ये अंश जो हिंदी का है, तो मैं ये कहूँगा कि जितनी ये जो पॉपुलेशन को लेके एंग्जाइटी है, अभी यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसमें एग्जैक्टली इसी चीज़ को जो है इसी संदर्भ में बात की गई, कैसे सस्टेनेबिलिटी जितने हमारे इश्यूज हैं, क्योंकि इनको एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जो कोविड में भी हमने जो देखा, जो एंग्जाइटी थी, कोविड का भी कारण एक तरह से यही है कि हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया, प्रकृति को। तो प्रकृति के पास ही समाधान है। हमारा एक सेशन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे पूरा 90 घंटे का, उसको आप देखिए, बहुत सारी चीज़ों का सवाल मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, सॉरी दोस्त, एक छोटा सा सवाल है सर। नहीं देखिए, टाइम भी खत्म हो गया। गोविंद जी से अगर आप लोग आज्ञा दें चारों हमारे पैनलिस्ट, तो आप पूछ लें। मुझे कुछ नहीं है, इन लोगों का सेशन है अगला। अब सर उनसे बोल दीजिए आप। अब पूछिए जल्दी से, लेकिन मैं सॉरी, मैं लिबर्टी ले रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा नहीं लगता, जल्दी से। सर, जो रोल ऑफ मीडिया है आज की डेट में, क्योंकि जो उसमें जो गोविंद सर के लिए उसमें कोई एनवायरनमेंट, एक दो प्रोग्राम को अगर छोड़ दिया जाए, कोई उसमें कोई एनवायरनमेंट या सस्टेनेबिलिटी या जनसंख्या वृद्धि रिलेटेड कोई स्पेस ही नहीं है उसका। ठीक है, तो क्या कारण है उसका? गोविंद सर जवाब दे, उससे पहले बता दूं कि ये शो भी हमारे चैनल पे चलता है भाई। तो एक दो प्रोग्राम ये भी आज तक पे आप देखते हैं और खूब देखते हैं जितने। ठीक है मैम, ये कुछ हद तक आपकी बात सच हो सकती है, जैसा सईद भाई ने कहा भी कि ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बाइकआउट होता है मीडिया में, लेकिन मीडिया जो है आज की तारीख में वो बाज़ार की ज़रूरतों के हिसाब से चलता है। मतलब जो डिमांड होगी वो सप्लाई होगी। अब ये नहीं कि मतलब मीडिया अपनी बात को थोप रहा हो या शिक्षित नागरिक तैयार कर रहा हो, ये उसका ध्येय उस तरह से नहीं रह गया। उसका ध्येय एक तरह से मतलब जो डिमांड है उसकी पूर्ति करना है। तो इसलिए यदि समाज से इस तरह के कार्यक्रमों के लिए डिमांड आएगी तो निश्चित रूप से मीडिया वाले भी उसको दिखाएंगे। अखबार वाले छापेंगे, 1980 से पहले बहुत छाप रहे थे, लेकिन आज की तारीख में आपका कुछ हद तक आपका सवाल सही है, मगर उसका असली कारण है कि आज जो है वो मीडिया की जो चाबी है वो समाज के हाथ में और दूसरे शब्दों में बाजार के हाथों में है। तो इसलिए जो है वो कमी होती है। यदि जागरूकता आएगी और तमाम लोग इस तरह की डिमांड करेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा और इस तरह का काम भी मीडिया करेगा। थैंक यू। कार्तिकेय साराभाई जी, हुमा मसूद जी, डॉक्टर रामबूज, डॉक्टर गोविंद सिंह, आप सभी का हमारी इस सार्थक चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। और हम ये कह सकते हैं कि जागरूकता एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है, कदम है जनसंख्या नियंत्रण के लिए और अनियंत्रित जनसंख्या विस्फोट को संभालने के लिए। ये भी हो सकता है, संभव है, अगर हमें मजबूत इच्छा शक्ति हो तो 2050 नेट ज़ीरो का जो हमारा लक्ष्य है उसे हम हासिल कर सकते हैं। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों का एक बार बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। I would like to invite Dr. Ramboj to present the mementos to our distinguished panelists.
थैंक यू। मुझे क्या ज़रूरत है आप तो Thank you very much. So, ladies and gentlemen, the parallel sessions are taking place in few different venues, and there will be one session here as well. So please be kind enough to be present at the relevant venues. This session is going on in this just around. The launch of Sasani will be taking place at this auditorium. Please be kind enough to be present at the respective venues. Thank you so much. अभी sorry, not now. I'll see you.